ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आपका जानकर बहुत खुशी होगी कि आज हम एक नया सब्जेक्ट, एक नया सेशन, सीरीज ऑफ सेशन चालू कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मचर्य लाइफ के बारे में, ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस सब्जेक्ट को हमने इसलिए चुना क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल की जनरेशन में एक नया स्लोगन बनता जा रहा है, एक नया एम ऑफ लाइफ, विच इज एंजॉय, जस्ट एंजॉय विदाउट थिंकिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यहाँ तक कि ऐसे साधु आ गए हैं जो कि सो कॉल्ड साधु, जो कि बोलते हैं कि संभोग से समाधि तक, विच मीन्स दैट इफ यू एंजॉय सेक्स लाइफ अनरेस्ट्रिक्टेडली, वन डे यू विल गेट डिटैच्ड। कि आप इतना एंजॉयमेंट करो, इतना एंजॉयमेंट करो कि आप उस एंजॉयमेंट से डिटैच्ड हो जाओ, एंड दिस इज द वे टू गेट डिटैच्ड। एंड दिस इज नॉट व्हाट कृष्णा सेज इन भगवद गीता। कृष्णा सेज इन भगवद गीता इन 3.39 दैट जो लिविंग एंटिटी, द लिविंग एंटिटी इज प्योर कॉन्शियसनेस, is pure consciousness. Krishna consciousness becomes covered, our consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust. ये lust जो है, which is one of the, which we are discussing, the subject is attraction towards the opposite sex. This lust actually covers our pure consciousness and is never satisfied. Krishna says it's never satisfied and burns like fire. It burns like fire. For example, if you put ghee in the fire, it burns more. So you cannot actually satisfy this lust by enjoying more and more, as the present days some people says, and there are many followers, because people actually want to enjoy the life, and anyone says come and I will give you unlimited, unrestricted enjoyment, लोग उसके पास तुरंत चले जाते हैं, इसलिए उन लोगों के पास बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है। Therefore, this session is not for those जिनके लाइफ का पर्पस एंजॉय करना है। दिस सेशन इज फॉर दोज हु वांट टू अचीव द रियल एम ऑफ लाइफ, व्हिच इज गोइंग बैक टू गॉड, गेटिंग रिड ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ, गोइंग बैक टू गॉड एंड डूइंग डिवोशनल एक्टिविटीज टू कृष्णा एंड अचीविंग द रियल नेचर ऑफ द सोल, व्हिच इज नित्य कृष्ण दास। तो अचीविंग दैट रियल नेचर, गोइंग बैक टू गॉड एंड सर्विंग द गॉड, सर्विंग द डिवोटीज, जिसका भी लाइफ का ये पर्पस है, उसको इन सेशंस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज माहौल बहुत खराब है। हम वी आर इन गुरुकुला, ओके, वी आर इन गुरुकुला, बट स्टिल आसपास का जो माहौल है वो ऐसा है कि जैसे हम प्यूबर्टी, जैसे ही हम 10 to 12, मोर देन 10, 11, 12, 13, 14 इस एज ग्रुप में आएंगे, नेचुरली दिस सेक्स डिजायर विल मैनिफेस्ट। एक्चुअली हमारे हृदय में ये डिजायर्स अनेक जन्मों से हैं, लेकिन जब ये बॉडी डेवलप जब तक नहीं होती है, तब तक ये डिजायर्स मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। जब हमारे कुछ बॉडी के पार्ट्स डेवलप होते हैं, तब ये डिजायर मैनिफेस्ट होती है, जबकि ये डिजायर हमारे अंदर पहले से ही थी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ इज द टाइम। इसीलिए ये सेशंस अब आपके लिए रखे गए कि अब जो है ये डिजायर बहुत तेजी से अटैक करती है, जैसे कि समुद्र में लहरें अटैक करती है ना, किनारे पे एक लहर दूसरी लहर, इस तरह से ये डिजायर्स हमें बहुत अटैक करती हैं। अगर हम इसको अभी कंट्रोल नहीं करेंगे तो वी विल गेट डिवास्टेटेड। हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे इससे बचा जाए, कैसे इस भड़कती अग्नि से बचा जाए जो सबको जलाती जा रही है। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि बटर को अगर अग्नि के पास में लाया जाए तो बटर पिघलेगा ही। कई लोग कहते हैं कि हम अगर वुमन के साथ रहेंगे नहीं तो हमारी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी, हम कैसे सीखेंगे कि उससे बातचीत कैसे करनी है। बट दिस इज नॉट द रियलिटी। हम देखते हैं कि बहुत ही साधु लोग जो होते हैं, जिन्होंने सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन किया होता है, शास्त्रों को पढ़ा होता है और अपने अंदर स्ट्रॉन्ग रखा होता है अपने आप को, सो दे डील विद द एंटायर सोसाइटी, दे बिकम द जगत गुरु। They become like Srila Prabhupada was sannyasi, but he was a Jagat Guru. He was dealing with all the people. So it is not like that. Whereas इससे हमारा नुकसान होता है। The more we get a close association of opposite sex, as a butter, जितना भी पास लाया जाता है अग्नि के, उसके पिघलने के उतने चांसेस बढ़ते जाते हैं, और वो पिघलता ही अल्टीमेटली। और वो बटर, प्रभुपाद कहते थे, बटर इज एक्चुअली अ मैन।
Male is like a butter and woman is like fire. So this is very important topic we are going to discuss. Is very very urgent when we consider your age group. So I request you to hear it, attend it very carefully. Okay. So what is the purpose of these sessions? The purpose is not to make brahmacharis here. हम ब्रह्मचारी बनाने का कोई हमारा इरादा नहीं है किसी को कि हम अरे इसको सुनेंगे तो हम ब्रह्मचारी बन जाएंगे. So when the appropriate age comes, which is around 25 whatever, 22, 23, you may decide what ashram you want to go. Whether you want to go in a grahastha ashram, you want to marry, or you want to become a brahmachari, it is up to you. But जब तक हम गृहस्थ लाइफ में नहीं जाते हैं, even if we have decided कि हमें गृहस्थ बनना है, तब भी ये सेशंस हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं, क्योंकि the purpose of life is to live a life of restrained, regulated life in Krishna consciousness. Regulated in Krishna consciousness. That is the purpose of life. So whether you want to become a grahastha or you want to become a brahmachari, these sessions are for both set of actually boys. We are concentrating here only for boys. So we will be talking a lot of things about boys only. Okay. So a brahmachari never comes in close contact with a woman. So which means all of you, till the time of you are 25 years of age or till the time you get married, you must live a life of brahmachari. And which means never to come in close contact with the woman, not to talk. We will discuss it about more in the definition phase of a brahmachari, but at a high level, not to have a close contact with the woman, close association, never, not even in the thoughts. So even if you want to live a life, grihastha life, you must live a life of a great brahmachari. We have a lot of examples from shastras like prachetas who did tapasya for 10,000 years, and after that they entered into grihastha life. And then we have example of Priyavrat Maharaj who did a lot of intense tapasya, and then he became a king and he married, and he was a successful king in a Krishna consciousness. Krishna saved him, falling into the prey of, or falling into the andhakupam of grihastha life. So grihastha or griha medhi life rather, right? So grihastha is also a brahmacharya, or Shastra says, because when grihastha accepts a woman as a wife, he accepts a woman to help him in Krishna consciousness, like Kardama Muni. So Kardama Muni accepted Devahuti, rather he asked, he desired, he requested Krishna to give a girl of equal mindset, so that it can be helpful in having a progeny जो कि हमें help करे ऐसे संतान उत्पन्न करने में जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, जो कि वर्ल्ड को सुधारे और हमारी भक्ति में help करे. When we don't want to become a brahmachari, we don't have that mindset, we can enter a grihastha life, but that is also for advancement in Krishna consciousness, not for any other purpose. So that is what is very important here. So even if you want to become a brahmachari or grihastha, I would request to pay very much attention to this, because this is for all. This provides us strength to live a successful grihastha life, which is full of Krishna consciousness, right? So before entering into that grihastha ashram, you must do austerities. You must live life of restrictions. Okay. So people generally also think that if we don't have, a close association with women, then our life will become morose, like a hell. Whereas unrestricted life leads to hell. It comes in if you go to Srimad Bhagavatam 5th canto, it talks about a lot of things. Unrestricted sex leads us to different kinds of hells, like Rāma and all. So please pay attention to 18.37 Bhagavad-Gita, where it is said that yattat agre vishamiva pariname amritopamam, which means that जो निचले लेवल के रस होते हैं वो प्रारंभ में बड़े अच्छे लगते हैं. तमोगुणी रजोगुणी चीजें प्रारंभ में बड़ी अच्छी लगती है. जैसे कि हम लोग कुछ खाते हैं, हम बहुत कुछ तीखा खाते हैं, चटपटा खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसका पेट में बड़े उसके कई सारी डिजीज हो जाती हैं.
हमें इस तरह का खाना खाने से, तो प्रारंभ में बड़ा अच्छा लगता है। उसी तरीके से अनरेस्ट्रिक्टेड सेक्स लाइफ, क्लोज एसोसिएशन विद वुमन बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा रिफ्रेशिंग लगता है कितना अच्छा है, कितने अच्छे से वो हंसती हैं, कितने अच्छे से वो बोलती हैं। We love to talk with women initially and associate closely with women, but actually में इसका परिणाम बाद में बड़ा बुरा होता है। तो जो बुरी चीजें होती हैं उनका परिणाम शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो अच्छी चीजें होती हैं उनका परिणाम प्रारंभ में बड़ा बुरा लगता है। इसलिए अगर आप अभी रेस्ट्रिक्टेड लाइफ जीते हैं तो आपको बाद में इसका बहुत लाभ होने वाला है। You have to remember that, because this is सतोगुण आपके एंजॉयमेंट है या कुछ भी कह लीजिए, जो लाइफ है सतोगुणी है, ये प्रारंभ में बड़ी कठिन लगती है लेकिन बाद में बड़ी अच्छी लगती है। इसलिए बी प्रिपेयर्ड। अगर आप अभी से इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लेंगे तो आपको कभी ऑस्टेरिटी लगेगी नहीं। सो एट अर्ली एज ऑफ दिस इज द राइट एज। बाद में ब्रह्मचारी मेंटली बनना, फिजिकली तो हम चलो रेस्ट्रेंट कर लेते हैं लेकिन दिमाग में हमारे थॉट घूमते रहते हैं। बट अगर अभी से आपने अपने थॉट प्रोसेस को रोक लिया, उसको सही जगह चैनलाइज कर दिया, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ एकदम एनर्जी के साथ रहेगी, जोश के साथ रहेगी, और आपको आगे आने वाली लाइफ में बहुत इससे मदद मिलने वाली है। आई मस्ट टेल यू दैट, एंड दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दैट वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ सेशंस टू लीड आवर लाइफ एट द अप्रोप्रिएट टाइम। ओके, हमारे जो शास्त्र हैं वो बार बार हमें ये आगाह करते हैं, आप शास्त्र जब पढ़ते हैं, कि एक मैन को एक वुमन से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, शुड नॉट बी कैप्टिवेटेड बाय द वॉइस ऑफ वुमन, बाय द लुक्स ऑफ वुमन, बिकॉज एक आदमी के जीवन में माया एक वुमन बन के आती है और एक वुमन के जीवन में माया एक मैन बन के आती है। प्रभुपाद ऐसा भी कहते थे कि जो लोग, एक व्यक्ति है जो अपनी एक वुमन के थॉट्स को सोचता हुआ प्राण त्यागता है, वो अगले जन्म में एक वुमन बन के आता है, और वुमन जो एक मेल के थॉट्स में प्राण त्यागती है वो मेल बन के आती है। तो कितना इसका गहरा हमारे जीवन में असर हो सकता है, बिकॉज ये हमें रीबर्थ के लिए फोर्स कर सकता है। इफ यू आर अटैच्ड टू सेक्स लाइफ, unrestricted sex life, we are attached to opposite sex, we have to take birth again, and it is not that we may become human, we may go down to hellish condition, animalistic condition, like a monkey, like a pigeon. A pigeon it does sex I think 12 times in an hour. So ये लोग जो है ना, but they are very famous in sex life. So we may downgrade ourselves to an animalist and to an animal. और साथ ही साथ ये हमें एक ऐसा इल्यूजन देता है कि आई कैन एंजॉय, यू नो दैट कृष्णा सेज भोक्ताराम जगतपसम, आई एम द एंजॉय, enjoying with the opposite sex, enjoying of a man with a woman gives a thought to the man that yes, I am Krishna, like Krishna. Okay, or he may not be thinking I am Krishna, but he is thinking I am a Purusha or I am enjoyer. So Krishna enjoyed with gopis, so I can enjoy with my girlfriend or my wife later on in the Grahastha ashram. So you have to remember these principles we are going to discuss will help you not only in a Brahmcharya life, in your Grihastha life as well. That how to live a life of restraint, how to associate. Once you become a Grihastha, then you will closely associate with the woman, but how to associate that? What should be the purpose of that association? Therefore, to get rid of this illusion, I am the enjoyer, we must understand Brahmacharya and Krishna consciousness life and make our life successful, make our life Krishna consciousness, and make our life as the last birth and go back to Godhead. So this was the introduction session today. Definitely we'll have some question answer on this session as well, and then we will start one by one each and every lesson from Brahmacharya and Krishna consciousness. Thank you very much. Srila Prabhupada ki Jai.